So, hello everyone. I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured live learning lectures, mock tests, and performance based rewards. So, here we are resuming the direct and indirect speech का part 2. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. व्हाट इज़ इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स द स्ट्रेट कोटेड वर्ड्स दैट हैज़ बीन स्पोकन बाय समवन, जो कि आप लोग कोट्स या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो जिसमें आपको देखने को मिलता है, एंड उसमें हम लोग पंचुएशन का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद द indirect speech. Indirect speech means the third party intervenes with our conversation, and it's a transfer from speaker to the listener, and a intermediary party is there. यानी कोई बीच में है जो कि हमारी एक एंड से दूसरी एंड तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे सेंटेंसेस है, जो कॉन्वर्जेशन है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है. तो उसको हम हमेशा बिना कोटेशन और बिना पंचुएशन मार्क्स से लिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट कोटेड विद द ओरिजिनलिटी. जिसने बोला है when we are using that content, तभी हम उसमें पंचुएशन मार्क्स या कोटेशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा कि टेंसेस, तो सिंपल प्रेजेंट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिंपल पास्ट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जा रहे हैं. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग एवरी एस्पेक्ट को कंसिडर करें. देन प्रोनाउंस में भी मैंने आपको बताया था, तो आई का ही और शी हो सकता है. देन माई का हिज हर हो सकता है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे, और उसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था, और एक छोटा सा एक्सरसाइज भी हमने किया हुआ था. नाउ हियर वी आर कमिंग टू द पार्ट 2, जहाँ पर हम हमारे जो मॉडल्स हैं उसको चेंज करेंगे. व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट मॉडल, वर्ब्स वी हैव टू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शिफ्ट. टाइम शिफ्ट में भी हमने देखा था कि टुडे का हो जाएगा दैट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, राइट. देन का हो जाएगा नाउ, दीज का हो जाएगा दैट, राइट. इधर हो जाएगा विल का वर्ड, शेल का शुड, कैन का कोड, मे का माइट, right. So we have to change this modal verbs with the base of the situation on the time shift, right. इधर example दिया हुआ है that he said I will go tomorrow. He said that he would go the next day. next day जाने वाला है और will का हो जाएगा would. So we have to change the modals also when we are shifting from direct to indirect. Then changing time and place expressions, तो ये I think so दिस इज़ अ रिपीटेटिव स्लाइड टू यू, जो कि हम लोग पहले से एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर रिवाइजिंग हियर कि टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन. शी सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो. शी सेड दैट शी वुड, विल का हो गया वुड, मीट मी, यू का हो जाएगा मी, देयर द नेक्स्ट डे, हियर का देयर और टुमारो का द नेक्स्ट डे. ऑल द कोटेशन मार्क्स हट गए एंड दैट आ गया. okay, so we have to follow that structure also. Then comes rules for the questions. What if questions are being asked, right? So in indirect speech, question structure changes to a statement form. We have to change the question structure to a statement. हमें एक statement form में उसे change कर देना है. First one is reporting verb changes to asked और inquired, right. जो हम पहले that लगा देते थे या said की साथ that लगा देते थे, उसकी जगह पे हमें डाल देना है asked, right. Because in the matter of question, you are asking or you are inquiring about something, right, and the helping verb follows the subject. Whatever will be the subject, it will be followed by the helping verb. इधर का example है, he said where are you going. He asked where I was going, right. Where are you, are का हो जाएगा I was going. okay, he asked where I was going. Understood, right. For questions, the question would be converted into a statement form. We have to also remove the question mark also, right, because question mark is also a kind of punctuation mark. And we have to make sure that we use asked, right, not that. okay, then we have to here are some rules for commands and requests. what if कोई command दे रहा है या what if कोई request दे रहा है, it is all about the
इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस या कोई ऑर्डर दे रहा है, सो वी हैव टू फॉलो दैट। सो कमांड एंड रिक्वेस्ट चेंज एज पर द टोन ऑफ द सेंटेंस, टोन के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड। तो जैसे हमने क्वेश्चन में किया कि ही आस्क्ड, इधर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, ही रिक्वेस्टेड, ही एडवाइस्ड, द टीचर एडवाइस्ड, राइट। And second, we have to follow that to plus verb replaces the imperative form, whatever is the imperative form. Here in the example, open your books is the imperative form, so we have to replace it with to open their books, whatever is the verb. Here verb is open, right? The teacher ordered the students to open their books. The teacher requested the students to open their books. The teacher requested the students to study at टाइम, राइट। क्योंकि अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले पूरा सिलेबस खोलेंगे एंड देन दे विल लाइक रिग्रेट करेंगे कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, काश हम लोग पहले पढ़ लेते, एंड देन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, एंड देन होल साइकिल ऑफ द रिग्रेट स्टार्ट्स। बट इट्स बेटर कि यू नो डेली आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ें, एंड इट विल बिल्ड यू to the another level, because compounding effect comes here, right? So थोड़ा सा एक छोटा सा लाइफ लेसन था। इंडायरेक्ट हो जाएगा आपका द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर, योर का हो जाएगा देयर, राइट। देन कम्स रूल फॉर द एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। सो एक्सक्लेमेशंस में भी हम लोग रिपोर्टिंग क्या हो जाएगा कि एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, राइट। और हमें एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देना, बिकॉज इट्स अ बेसिक रूल कि हमें बिना पंचुएशन से ही डायरेक्ट को जब हम इंडायरेक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू गो punctuation-less, okay? Punctuation-less word for the day, okay? Exclamations and wishes are reported using words that reflect emotion. First, we have to use reporting verbs like exclaimed, wished, prayed. Second, remove the exclamation mark. Example given, direct. She said, what a beautiful day. She exclaimed that it was a beautiful day. We have to remove what also, right? It was a beautiful day. Then comes a mixed example. ऑल फॉर्म्स जो कोई जब जितने तक अभी हमने एक बार पढ़े हैं। सो डायरेक्ट में बोला गया ही सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी, सो इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। देन हियर कम्स शी सेड कैन यू हेल्प मी, शी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर। Then the boy said, hooray, we won the match. The boy exclaimed with joy that they had won. वो जीत गए थे। मैं 5 to 6 सेकेंड्स का पॉज ले रहा हूँ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, बिकॉज ऑल फॉर्म्स यानी जितना भी अभी तक हमने कवर किया है उसका एक एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। सो आई एम पॉजिंग फॉर 5 to 6 seconds. प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके डन, आई होप हो गया होगा। कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमें अवॉइड करनी है, तो वी हैव टू नॉट फॉरगेट कि हम प्रोनाउंस चेंज ना करें, बिकॉज इट्स अ कॉमन मिस्टेक जो कि सब लोग करते हैं कि प्रोनाउन चेंज करना भूल जाते हैं। सो वी हैव टू चेंज इट। वी हैव टू कीप टेंस सेम व्हेन नॉट नीडेड। जब चेंज नहीं करना है टेंस को तो तभी उसी फॉर्म में रखना है। नॉट चेंजिंग टाइम और प्लेस वर्ड्स, टाइम और प्लेस वर्ड्स के टुडे को चेंज करना भूल गए, टुडे का टुडे ही लिख कर है, सो वी हैव टू चेंज दैट। रॉन्ग रिपोर्टिंग वर्ब्स को यूज़ करें, जैसे कि क्वेश्चन में हमने सेड दैट लिख दिया तो क्वेश्चन में वी हैव टू यूज़ आस्क्ड और इंक्वायर्ड। देन एक्सक्लेमेशन में वी हैव टू यूज़ एक्सक्लेम्ड or prayed, right, this ones. And in imperative forms may we have to use ordered, requested or advised, suggested, right? So we have to use the correct reporting verbs, and then we have to always check tense, pronoun and context, in which context we are talking जब हम उसको direct को indirect में convert कर रहे हैं। Okay, so these are the common mistakes that we need to avoid. Okay, so thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. थैंक यू, बाय। होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन नॉलेज टेम्पल। थैंक यू, बाय।